सो इफ़ यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, आई एम श्योर आप अपने या अपने क्लाइंट्स के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को ग्रो करना चाहते हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक रियल एंड जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं जिससे आप रियल पीपल, रियल फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंटली राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। आई यूज दिस मेथड विद ऑल माई क्लाइंट्स who wants to grow their Instagram followers। उनको पहले दिन से रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सो बिफोर आई गेट इनटू दिस वीडियो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको करना क्या नहीं है। पहले तो आपको वो जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं ना कि ग्रो योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, एंड आपके एकदम से 1000 फॉलोअर्स, 10,000 फॉलोअर्स, 20,000 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे आप अगर आप इतना पे करेंगे। डोंट डू दैट। आपके फॉलोअर्स बढ़ तो जाएंगे। आई हैव सीन मैनी एग्जाम्पल्स विद माई क्लाइंट्स जिन्होंने इनका यूज़ किया है। उनके 10,000, 20,000, 1 लाख तक फॉलोअर्स उन्होंने इस तरीके से बढ़ा लिए हैं। लेकिन जो ये फॉलोअर्स होते हैं ये बॉट फॉलोअर्स होते हैं, एंड इससे आपकी एंगेजमेंट बिल्कुल डेड हो जाएगी। जस्ट सपोज कि देयर वाज अ क्लाइंट जिसके 30,000 फॉलोअर्स थे, और जब भी वो पोस्ट डालता था तो उसके 10 या 15 लाइक्स आते थे। उससे फेसबुक और इंस्टाग्राम को ये सिग्नल मिलता है कि आपका तो कंटेंट ही अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग देख ही नहीं रहे हैं, इतने सारे फॉलोअर्स लेकिन इतने से लाइक। सो आपकी एंगेजमेंट हर एक पोस्ट के लिए इट विल बी किल्ड। सो प्लीज़ 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 डोंट मेक दिस मिस्टेक। आई हैव सीन many examples, many people still doing this mistake। और दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये कि आपको अपने पोस्ट बूस्ट नहीं करने हैं। जो बूस्ट बटन पर क्लिक करके एड्स रन करके आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो शायद ऐसा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बूस्ट पोस्ट में एड्स फेसबुक पे भी जाती हैं और ऑल द अदर प्लेसेस योर एड्स गेट डिस्प्लेड, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट पर फॉलोअर्स होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा होगी इस वजह से। क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए, वाई वुड यू रन अ एड ऑन फेसबुक? ओके, सो यू गेट माई पॉइंट। डोंट बूस्ट पोस्ट or don't click on boost post and go that way as well। So your next question will be, Nikhil, तो करना क्या है? Right, so this is what you need to do. This is how you grow Instagram followers consistently with the use of Facebook and Instagram ads. So let's jump directly on screen. Let's do a step-by-step process, and I'm sure you are going to get the results from very first day itself। So as you can see, I'm on my screen। आपको कुछ नहीं करना है, just log into your Facebook account, and I'm sure आपके पास already एक अपना Facebook पेज होगा and Instagram पेज पेज होगा। So आपको क्या करना है, उन दोनों को एक कनेक्ट, आपस में कनेक्ट कर लेना। तो आपका इंस्टाग्राम पेज फेसबुक पेज से कनेक्टेड होना चाहिए। सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट ओपन, मेक श्योर यू आर लॉग इन टू योर फेसबुक अकाउंट। न्यू टैब में जाके आपको facebook.com//ads manager। So if you see, this is what you need to write, facebook.com/ads manager। तो अगर आपका ad account नहीं बना होगा, so this will show you a step-by-step process to create your Facebook ad account। बस आपको करना ही है कि नेक्स्ट क्लिक करके जस्ट सेटअप योर करेंसी, सेटअप योर टाइम जोन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री के हिसाब से, एंड सेटअप योर एड अकाउंट। दैट इज़ ऑल। तो एक बार आपने अपना एड अकाउंट बना लिया, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द डमी एड अकाउंट विच आई हैव। एंड इस एड अकाउंट में आने के बाद आपको फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ सेटअप योर बिलिंग। ओके, सो आप यहाँ ऑल टूल्स, जो ये ऑल टूल्स का बटन है, इस पर क्लिक करके बिलिंग सेक्शन में जाके जस्ट क्लिक ऑन बिलिंग, एंड यहाँ पे पेमेंट सेटिंग में जाके और पेमेंट मेथड पे जाके अपना एक पेमेंट मेथड यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मेक श्योर यू कनेक्ट योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हैं तो बेटर होगा। आप फंड्स भी ऐड कर सकते हैं गूगल पे, पेटीएम, उन सब का यूज़ करके, बट आई डोंट प्रेफर दोज मेथड, क्योंकि उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पे आके देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर करंट बैलेंस एंड हाउ मच यू हैव टू पे। एवरी टाइम यहाँ पे आके देखना पड़ेगा। और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जिस दिन आप नहीं देखेंगे और आपका बैलेंस ज़्यादा हो गया है, तो द प्रॉब्लम विल बी लाइक इफ़ देर इज़ नो बैलेंस इन योर अकाउंट एंड यू आर स्टिल रनिंग एड्स,
Facebook might just block your account after that if you have not paid that amount. So I don't really want that, बिकॉज एक बार अकाउंट ब्लॉक हो गया तो उसके बाद उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? एड अकाउंट, एंड यू नीड दिस एड अकाउंट्स फॉर एवर. So in those cases I suggest use the debit card and credit card. Those are the best payment method. उसमें अपने आप charge हो जाता है whenever you reach the threshold. So once you have set your payment method, just click on all tools again and come back to ads manager. So here I am in my ads manager. Now actually I need to go to the audience section first. मुझे एक audience बनानी है Instagram वाली, जिसका मैं यूज़ करूँगा अपने कैंपेन में, ठीक है? सो फर्स्ट लेट्स क्रिएट दैट ऑडियंस. सो यू गो टू ऑल टूल्स अगेन एंड क्लिक ऑन ऑडियंसेस हियर. वंस यू क्लिक ऑन ऑडियंसेस इट विल टेक यू टू दिस विंडो, ठीक है? ये ऑडियंस सेक्शन है. या तो आपको अगर पहली बार ऑडियंस बना रहे हैं तो ऐसी वाली नहीं, आपको एक क्रिएट ऑडियंस का बटन आ जाएगा, ठीक है? सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट ऑडियंस फ्रॉम हेयर, कस्टम ऑडियंस, एंड देन चूज इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है? and then click on next. So this window will come. Source में आप अपना जो Instagram account है वो choose कर लीजिए, and उसके बाद it will give you different option to create audience. So आप ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे audience बना सकते हैं. I will go with everyone who engaged with this professional account. So I can create audience of people who engaged with my Instagram account. There are other ways also, who started following your professional account or anybody who visited your profile. You can create audience out of all of these different type of people also. अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा followers है, you can go these specific also, anybody who have visited the profile and all of those things. But I am assuming आपके पास ज़्यादा followers नहीं है, so we will go with anyone who engaged with the account. So the person who has engaged with ads, पोस्ट, उन्होंने सेव किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, प्रोफाइल विजिट किया है, एवरीथिंग, ऑल ऑफ देम विल कवर or come under this particular option. So I'll go with this. Then I will, retention rate is how long do you want to keep those people. So in the last 365 days, which means in last 1 year, who have engaged with my Instagram account, I'm creating an audience out of all those people, and then just name it whatever you want to name it, IG audience last 365 days, and then click on create audience. I will not do that because I already have an Instagram audience. If you see here, IG audience last 365 days. Okay, so once you have created this audience, come back to ads manager, and once you are in your ads manager, once you click on ads manager, you will be here. इसके बाद हमें अब एक कैंपेन सेटअप करना है, ठीक है? सो वी विल रन अ कैंपेन जिसका एक मिनिमम बजट हम डिसाइड कर लेंगे कि हाउ मच वी कैन स्पेंड. You can start as low as 100 rupees a day also, that is like 3,000. So if you are making good money from Instagram, I'm sure you do want to reinvest that into growing your followers and getting more followers, more clients, right? So you can start as low as 100 rupees also, and eventually you can increase it to whatever you can afford. So click on create campaign after that, and choose the objective as traffic. Okay, so go with traffic, click on continue, give a name to your campaign, anything which you can remember. I'll just keep it as it is, and then if you scroll down, you can set your advantage campaign budget here as whatever you want to keep it. Let's say I just want to keep a daily budget of, as I said, let's say 200 in this case. So 200 rupees a day. Okay, then once you are done here, click on next. After that, if you see, just click on website from here, and then if you scroll down, just come to the section, here, audience part. So in the audience part, whenever you are playing with the audience, just keep a track of what is your audience size here. Okay, so in this case, I want followers from India, let's say, and then 18 to 65 plus, whatever your target audience group is, you can keep that. Otherwise, if anybody can be your followers, you can go ahead with all of those options as well. Female, male, gender also you can choose, and interest also you can choose. Let's say if you're in digital marketing niche, so you can choose all the people. Click on edit, choose all the people who are interested in digital marketing. If you think your audience is interested in fitness, then choose the interest related to fitness, all those people. So all of those interests I'll put here. For example, fitness, I'll just take fitness in this case as an example.
physical fitness, Zumba fitness, all of these fitness, you can just go, maybe not Zumba fitness. If you see, just pay attention, don't choose as employer, choose it as interest. Physical fitness, let me just choose that. Then after that, if you click on suggestion, it'll give you all the related interests. So physical exercise, health and wellness, weight training, running, bodybuilding, all of those interests I can choose from here. And you can see my potential audience size is 183 million people. So that's it. And then if you scroll down, come to the placement section, and instead of going with advantage plus placement, just click on manual placement, and then make sure you don't select any of these options, just only select Instagram. If you want to grow your Instagram followers, obviously your ads needs to run on Instagram so that it is easier for people to follow them. So I will not go with Facebook, I will not go with audience network and messenger as well. In fact, in Instagram also there are these fields which you can also unselect from here. For example, now I will unselect this based on the format, the creative format which I have. For example, if I have a reel can be used in Reel obviously and in stories as well. So maybe I'll try and test my reel just in stories and in reel section. So I'll just go with these two options in those cases, and just unselect all of other options. Then you can also test feed, Instagram feed, because reels can be run in feeds, feed format, छोटे से उसमें आ जाती हैं वो, and then you can go ahead and choose that option also and see if you are getting results from feed as well. So I would actually go and test these options and see which one is getting me more results. Okay. Personally, if I suggest you record a reel can be about whatever you are doing, or where you can actually tell people why should they follow your Instagram accounts, or you can give any testimony or anything which can be different, which you think people will love, like, and would want to visit your Instagram profile. Just create a reel about that and then run those reels on reels obviously and stories, and see if that is getting you followers, and I'll unselect all of other options from here. So this is what you can do. And then once you're done here, then click on next after that, and here is where you will need to choose your Facebook page and Instagram account. So here I have already selected my Facebook page and Instagram account. If you see, just come down, scroll down to the section add media, make sure you add your video here. So I have this video, let's say this one. This is an ad again, the face is not that great, sorry about that, but yeah, if you see, this is a square ad, so it's perfect fit for feed section. Obviously all reels and all of those other placements also you can run it, but yeah, this is what I've chosen. And then in this case you can add primary text, headline, whatever the headline you want to keep, and then the description as well. So here all of this I'm sure you can take care of all that. In the website part, this is important. In the website section, what I'll do is I'll put my Instagram profile URL. Okay, so that will be, if you see, this is my Instagram ID. So my profile URL is instagram.com/my username. Okay, and I'll just copy this. Okay, and I'll just come back and paste it in the website URL. Sorry. So here is the Instagram profile URL. Call to action, we will keep it as learn more, or you can choose whatever you want to, I'll just keep it as learn more in this case. Okay, so this is what we will do. That's it. After that, what you need to do is just click on publish and publish the campaign.
after some time Facebook will review and it'll run your campaign, and that's all. That's it. You can start getting results right from the first day by running this campaign. Okay, before you go, I just want to tell you that you can now join the Facebook and Instagram ads course. The link will be in the description. And if this video was helpful, do like, share, and subscribe to the channel. I'll meet you in the next video very soon. Thank you.